Hello, dear students. Myself, Dr. Mini Sharma, Assistant Professor, G.H.G. Khalsa College of Education, Gurusar Sadhar, Ludhiana. Dear students, in our previous video, I have already shared with you the B.Ed Entrance Test 2022 Part D syllabus. And we also discussed about the various grammar topics and the MCQs that could be asked from those parts. In this video, I'm going to share with you another topic from the part D, that is English. This part belongs to reading comprehension. Well, dear students, before beginning, let us discuss what we mean by comprehension. Comprehensions judge our ability and capability of understanding the passage, power of analyzing the problem in proper perspective, and your ability of presenting your answer quickly, correctly, and systematically. Comprehension ensures your ability to read and understand the written passage. Through the comprehension exercise, you are asked to answer questions about the passage. Okay, what is the purpose of comprehension? It judges, it sees how capable, how able you are about the passage, understanding the passage. Okay, how you can analyze the questions that will be given to you in order to find out their answers from the comprehension. Okay, so it basically judge your understanding the capability. It also helps you in your critical thinking, in your problem solving abilities, etc. Yes, now we will see what are the various steps that are involved in reading comprehension. The first and the foremost, which is very important, is read the paragraph of the text given 2-3 times. Okay, whatever the paragraph or the passage is given to you for comprehending, okay, you need to read that particular passage at least for 2 to 3 times. Okay, you must read it thoroughly. Second step is read the questions, but one at a time. Okay, read the questions one at a time. You must go through the questions, okay, very thoroughly again. As you have gone through the paragraph, okay, you will be able to find answers of the questions within no time. Next is locate the answer, as you already have idea where the answer could be after the thorough reading. So in the first step only, I have already told you that you need to read the paragraph thoroughly at least for 2-3 times. So it will help you to locate your answer. Okay, within no time you will be able to see where in which paragraph. Okay, I mean maybe the text of the comprehension may be comprised of 2 or 3 paragraphs. So you will be able to find out in which paragraph you will be finding, you can locate your answers because you have already gone through it 2-3 times. Next is answer the questions. Okay, so there could be multiple choice questions also, as it will be there in your entrance test, or there could be written responses as well. Okay, that I'm talking about some other point of view. जैसे कि आपको कोई पेपर और आ सकता है जिसमें जैसे स्कूल्स में होते हैं या कॉलेजेस में हमें या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें कोई कंप्रीहेंड पैसेज करने के लिए आया है, तो उसमें हमें रिटन रिस्पॉन्सेज भी लिखने पड़ते हैं, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर ऑफ योर्स, दैट इज द B.Ed entrance test, you will be asked only multiple choice questions. Okay, let's move forward. In this, what are the various points you need to remember while answering the questions? So listen carefully. First is your answer should be based upon the information given in the passage. Okay, whatever the answer you will be giving for the questions, okay, related to the comprehension, your answer must be from the passage only. Okay, I will be giving detail of this particular point in next points that you could see already on the screen. Your own common sense, your own knowledge, your own presumption should not be taken into account while answering the question. Okay. If you have information from your own experiences and your own knowledge, you should not use it to answer any question. Okay. And even
If you think that there is some mistake in any paragraph of the comprehension, you must still answer the question on the basis of the information given in the passage. From this whole slide, one thing is clear, that you will not be giving answers out of the passage. आपके पास अपनी कॉमन सेंस है, आपके पास अपनी नॉलेज है, ठीक है, आप अपने पीछे आपने इतने यू हैव गॉन थ्रू सो मेनी कोर्सेज, आप अपनी स्कूलिंग करके आए हो, आपने ग्रेजुएशन की है, सो यू हैव अक्यूमुलेटेड लॉट ऑफ नॉलेज, ओके। आपके पास कोई उससे रिलेटेड प्रिजम्पशन हो सकती है पैराग्राफ से रिलेटेड, ठीक है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी कि आप आंसर अपनी उस नॉलेज से, उस एक्सपीरियंस से, उस कॉमन सेंस से या उस प्रिजम्पशन से दो। आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ कहाँ से ढूंढना है, जो पैराग्राफ आपको दिया गया है फॉर कंप्रीहेंडिंग, ठीक है, उसी से ही आपको आंसर जो है फाइंड आउट करना है। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं देना, आपने अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं देना। आपको जो पैसेज प्रोवाइड किया गया है, यू विल बी गिविंग आंसर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। Okay, so what are the various techniques or strategies that we can use, we can employ in order to find answers, in order to solve the comprehension portions? Okay, so the first is use your pencil or pointer. Okay, आप जब रीडिंग उसकी स्टार्ट करो, आप अपने हाथ में एक पेन या पेंसिल जो है वो ले सकते हो। सो दिस पेन और पेंसिल जो है व्हाट और हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू, ओके। इससे क्या है, आपकी एक स्पीड में कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, एक आपसे कोई भी जो वर्ड या सेंटेंस है वो आपकी आंखों से बच के नहीं निकलेगा, ठीक है। तीसरा, उसमें जो भी की वर्ड्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, दैट यू कैन अंडरलाइन और यू कैन, दैट इज वेरी मच सेंट्रल टू द पैराग्राफ, जो कि पैराग्राफ से बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं, ठीक है। उससे आपको लग रहा है कि कोई ना कोई उसका क्वेश्चन बना होगा, ठीक है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इन द पैराग्राफ, so you can underline those, words, or you can underline those sentences, or you can, circle those words. Okay, next is read for detailed understanding. Okay, so there will be individual words which are important for grasping a point exactly. Okay, so you need to go in detail. I have already discussed this thing with you while we were discussing about the steps. So circle keywords, I've already told you, circle keywords, important words or phrases which will enable you to zero in on precise point need to answer a question. You will be able to locate the answer very easily. Next is in case of unfamiliar words. Let us say, okay, there are some unfamiliar words. Okay, you have no knowledge about those words. So first and foremost thing is don't panic. ठीक है, आप उन वर्ड्स को देख के, उन अनफेमिलियर रेफरेंसेस को देख के, अनफेमिलियर वर्ड्स या फ्रेजेस को देख के आप जो है पैनिक ना करें कि आपको नहीं आता. इट इज नॉट सो. When you will go through the comprehension 2-3 times, automatically you will have a clear picture, or you will have you will be able to find out the context in which that particular reference or that particular word has been used. चाहे वो आपके लिए अनफेमिलियर है, लेकिन फिर भी जब आपको उसके थीम के बारे में ओवरऑल व्यू मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा बहुत उस वर्ड का जो मीनिंग है वो भी आप जो है जज कर सकते हो. सो इसलिए डोंट पैनिक. ओके, सो समटाइम्स लेट अस से still you're not able to find out कि इसमें क्या है. So for the time being, leave that particular question, leave that particular part, go to the another part. अगला करिए question, ठीक है. And after answering the all questions, आप दोबारा उस question पे आ सकते हो, and by the time maybe you will be able to find out the answer. Okay, next I have discussed a few of the tips that will help you in answering the questions related to the comprehension. Okay, so first is read each question carefully and be certain that you understand exactly what is being asked. Sometimes
व्हाट इज देयर, हम एक हरी में उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। सो उस जो है ना हरीनेस में व्हाट इज देयर कि हम कई बार जो है गलत उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। सो इसलिए सबसे पहले केयरफुली क्वेश्चन को आंसर क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए व्हाट हैज बीन आस्क्ड, इसमें पूछा क्या गया है। देन always read all the answer choices before selecting the best answer. Okay, now because I've already told you that in your paper, in your entrance test, you will be getting multiple choice questions. Okay, also in the comprehension part. Okay, so whenever you are going to answer a question out of the given choices, read each choice very carefully. Okay, and the best answer is the one that most accurately and most completely answer the questions being posed. Okay, so here I one thing that I want to mention is sometimes A part भी correct होता है, ठीक है, sometimes B भी correct होता है। तो कई बार क्या होता है कि उन्होंने all the above, okay, A and B इस तरह का जो है दिया गई होती हैं, options दी गई होती हैं। So then you need to see whether only A is correct, whether only B is correct, whether only C is correct, or A or B is correct, or A or C is correct, or A or B or B or C is correct, or all of them are correct. That you need to find it out. Okay. हो सकता है A भी correct हो, वो भी दिया गया, हो सकता है B भी correct हो, वो भी दिया गया है, ठीक है। So इसलिए you need to be very careful in making the choices out of the given choices. Okay. So best answer वो होगा जो कि सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट होगा और कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। कंप्लीट आंसर मीन उसमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, कि एक पार्ट देखिए अच्छा ये तो दिया गया है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है जो आधी इंफॉर्मेशन है या उस जो जो चॉइस दी गई है उसका आधा पार्ट जो है दैट हैज बीन टोल्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ, और समटाइम्स जो हाफ है वो लास्ट पैराग्राफ में दिया होता है। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ा, हमने फर्स्ट पैराग्राफ देखा, अच्छा इसमें ये आ रहा है तो हम फटाफट उसको क्विकली आंसर कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए आई हैव सजेस्टेड यू दैट यू शुड गो थ्रू द पैराग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, देन रीड आउट द क्वेश्चंस। ओके, सो व्हेन यू विल नो कि ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दैट इज आल्सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड इन द लास्ट पैराग्राफ एज वेल, then you will be able to locate the exact choice that has been provided to you. You will be giving the complete answer. Next, here's a note of caution for you. Savdhani hai. Be careful not to pick an answer choice simply because it is a true statement. Be careful also not to be misled by answer choices that are only partially true, only partially satisfy the problem posed in the question. Okay, we have already discussed कि maybe A part में half information दी गई है, another information has been given in the B part. So both A and B part may be correct. So in that case, okay, you need to be very cautious. Which choice is the correct one? Okay. Now next is methodology of eliminating wrong answer. Maybe this could be of certain help to you. Okay. In that case, what is there? The methodology of eliminating wrong answers also works here. It simply means that if you are unable to judge the right choice, let us say you're not able to locate the right choice, right answer, then tick the answers that you find that is totally incorrect, that doesn't go with the paragraph that is given. Okay, so in this way, if you have been provided with four choices, if you will be able to identify the three incorrect answers, so naturally the fourth one will be the correct one. This could be one criteria, but it's not a sure criteria, but you can use it, ठीक है, अगर आप कहीं पे stuck हो जाते हो. Okay, now it is the time for a practice. So let us practice for the comprehension part. The paragraph has been provided. So as I've told you in the steps only that we need to read this paragraph at least 2-3 times. So let us read it. So and find it out what are the various important words and what are the various important phrases, sentences, information, references that are there in this paragraph. Among predatory dinosaurs,
Few flesh eaters were bigger, faster, nastier than the tyrant lizard of popular imagination. The Tyrannosaurus rex, at least, that is what we have been led to believe. Now, research suggests that far from being the Ferrari of dinosaurs, Tyrannosaurus rex, whose ferocious reputation has fascinated generations of school children, was in fact a cumbersome creature with a usual running speed of 25 kilometers an hour. This is a mere snail's pace compared with modern animals such as the cheetah. Unlike some of the predators of today's African savanna, which can change direction almost immediately, the dinosaur would have had to turn slowly or risk tumbling over. And while a human can spin 45 degrees in a 20th of a second, a Tyrannosaurus would have taken as much as 2 seconds as it would have been hampered by its long tail. Thankfully, however, all its prey, such as tricep- Triceratops, would have been afflicted with the same lack of speed and agility. The findings were reached after researchers used computer modeling and biomechanical calculations to work out the dinosaur's speed, agility, and weight. They based their calculations on measurements taken from a fossil dinosaur representative of an average Tyrannosaurus and concluded the creatures probably weighed between 6 and 8 tons. Calculations of the leg muscle suggest that the animal would have had to top speed of 40 kilometers an hour, which is nothing compared to a cheetah's 100 kilometers an hour. It is sobering to reflect, though, that an Olympic sprinter runs at about 35 kilometers an hour, not sufficient to outrun a Tyrannosaurus should man have been around at that time. Okay, so I have given the one reading. Okay, so in one reading, okay, so maybe if you're listening it carefully, you will be able to locate, you will be able to find it out that this is about dinosaurs. The paragraph is about dinosaurs. तो डायनासोर के बारे में तो है, लेकिन डायनासोर के बारे में क्या है, एक पर्टिकुलर डायनासोर की बात की गई है, दैट इज टाइरानोसोरस रेक्स. टाइरानोसोरस रेक्स में भी आगे फर्दर क्या बताया गया है, व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इट इज, एंड इसकी स्पीड के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है. यू कैन सी इसकी स्पीड के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, इसकी स्पीड को कंपेयर किया गया है चीता के साथ, इसकी स्पीड को कंपेयर किया गया है ओलंपिक स्प्रिंटर के साथ. सो एक पैराग्राफ, एक रीडिंग में, ठीक है, हमें ये चीज समझ आती है. ओके, नाउ इफ वी विल रीड इट अगेन इन द सेम वे, वी विल रीड इट अगेन. ओके, मे बी एक में हमें इतना समझ आया है तो सेकंड में इससे ज्यादा समझ आएगा. ठीक है, अब आपने देखिए जैसे कि प्रिडेटरी वर्ड इज देयर. ओके, देन नेम ऑफ द दिस नेम कुड बी ऑफ सम यूज टू अस. ठीक है, लाइक टायरानोसोरस रेक्स, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है, देन cumbersome creature is there, cumbersome is there, then we are having snail pace is there, then we are having few more sentences, hampered is there. Okay, then we are having modeling and biomechanical calculations are there. So such kind of important words, keywords there, those words can be underlined. Now let us see what are the questions, okay, that we need to answer from this particular paragraph. Okay, so the first question is, in calculating the size, speed, and agility of Tyrannosaurus rex, scientists used. Which things were used by the scientists? Tyrannosaurus rex की साइज, उसकी स्पीड, उसकी एजिलिटी को टेस्ट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट ने किस चीज का यूज किया? ठीक है, फर्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स को एग्जामिन किया. बायोमैकेनिकल कैलकुलेशंस एंड कंप्यूटर मॉडल्स, कंपैरिजन विद मॉडर्न एनिमल्स, ए एंड बी टुगेदर है कि बी एंड सी टुगेदर है, यानी कि ए और बी मतलब फॉसिल को एग्जामिन किया प्लस बायोमैकेनिकल कैलकुलेशन की और कंप्यूटर मॉडल्स किया, या बायोमैकेनिकल कैलकुलेशंस के साथ साथ मॉडर्न एनिमल्स के साथ कंपेयर किया. ठीक है, हमने देखना है हमारा ए बी सी डी या ई में से कौन सा आंसर जो है वो सही है. लेट अस गो वंस अगेन टू द
प्रीवियस स्लाइड. ओके, सो क्वेश्चन आपको समझ आ गया है यहाँ पे. तो अब हम यहाँ से देखिए, हमें दो चीजें तो क्लियर थी कि बायोमैकेनिकल कैलकुलेशंस, कंप्यूटर मॉडलिंग तो यूज किया गया है. द फाइंडिंग्स वर रीच्ड आफ्टर रिसर्चर्स यूज्ड कंप्यूटर मॉडलिंग एंड बायोमैकेनिकल कैलकुलेशंस टू वर्क आउट द डायनासोर्स स्पीड, एजिलिटी एंड वेट. ठीक है. They base their calculations on measurements taken from the fossil dinosaur. ठीक है. So two things are clear from here: computer modeling, biomechanical calculations, और साथ में fossil of the dinosaur, इस चीज को यूज किया गया है. ठीक है. तो हमारा जो आंसर है, दिस इज द ए एंड बी टुगेदर, यानी कि डी आंसर इज करेक्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. अब हमने अकेला ये नहीं देखा, हमने साथ देखा कि क्या इस चीज के बारे में लिखा गया है, क्या इस चीज के बारे में लिखा गया है. ठीक है. वैसे कंपैरिजन विद मॉडर्न एनिमल्स भी था. ठीक है. लेकिन उसके हमें कोई ऑप्शन नहीं दी गई है इसके साथ. ठीक है, जिसमें ए बी और सी भी हो. और साथ साथ इसमें अगर हम प्रीवियस स्लाइड में एक बार फिर से जाकर देखें, प्रीवियस स्लाइड में अगर हम फिर से जाके देखें, तो इसमें खास करके जो है बच्चे फोकस्ड वे से ये लिखा गया है, द फाइंडिंग्स वर रीच्ड आफ्टर रिसर्चर्स. ठीक है. तो ये दो सेंटेंसेस जो हैं, जो हमें पूछा गया है, वो रिसर्चर्स के साथ जो है वो बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है. यानी कि ये जो साइंटिस्ट की या रिसर्चर की बात की गई है, ये पॉइंट ए और बी इसकी बात की गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवरऑल थीम ऑफ द पैसेजेस. ओवरऑल थीम हमने एक बार पढ़ लिया इसको. ए, बिकॉज इट वाज cumbersome, Tyrannosaurus rex was lucky to survive. Second, Tyrannosaurus rex speed and agility were still superior to those of other dinosaurs. Tyrannosaurus rex fires reputation is now laid to rest. Compared to modern predatory animals, Tyrannosaurus rex was slow and cumbersome. Okay. अगर हमने एक ओवरऑल थीम की बात लिखनी है, देखो, ऑल दीज आर पार्ट्स. बिकॉज इट वाज कम्बरसम, इट इज रिटन कि ये कम्बरसम था. ठीक है. तो टायरानोसोरस रेक्स वाज लकी टू सर्वाइव. इट हैज बीन मेंशन्ड इन द पैराग्राफ. सेकंड, टायरानोसोरस रेक्स स्पीड एंड एजिलिटी वर स्टिल सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर डायनासोर्स. ठीक है. दिस मे बी रॉन्ग. देन टायरानोसोरस रेक्स फायर्स रेपुटेशन इज नाउ लेड टू रेस्ट. अब आपको इसमें ये पता ना होना चाहिए कि लेड टू रेस्ट का क्या मतलब होता है. ठीक है. जिसके ऊपर स्टॉप लगा दिया. लेड टू रेस्ट, रेस्ट क्या होता है? जब हम रेस्ट करते हैं तो वी उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती. उसके बारे में मतलब इस प्रोवर्ब का मीनिंग क्या है कि कोई चीज जो चल रही थी उसको अब बंद कर दिया गया है. मतलब कि जैसे हम ये सोच रहे थे कि टायरानोसोरस रेक्स की जो रेपुटेशन थी फायर्स क्रिएचर की तरह थी, तो भयानक क्रिएचर की तरह थी. लेकिन रिसर्चर्स से जो पता चला है, रिसर्चेस से जो पता चला है, साइंटिस्ट ने जो पता लगाया है, from that particular research, that particular calculations, it has been I mean, we have come to the conclusion that he was not the kind of fire creator. He, as compared to as compared to today's जो हमारे जिसको हम फास्टेस्ट एनिमल बोलते हैं चीता, उससे भी उसकी जो स्पीड थी काफी कम थी. तो ये जो उसकी एक रेपुटेशन थी वो अब खत्म हो गई है. दैट हैज बीन नाउ लेड टू रेस्ट. ठीक है. Then is compared to modern predatory animals, Tyrannosaurus rex was slow and cumbersome. तो ये बात भी दी गई है. And E is none of these. ऐसा नहीं है. E तो हम क्रॉस कर दें. ठीक है. क्योंकि बाकियों के बारे में कुछ एक मेंशन दिया गया है इसमें. ठीक है. लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने एक ओवरऑल व्यू की थीम बतानी है. ओवरऑल अगर अकेला कम्बरसम वाला पार्ट देखें तो वो ओवरऑल नहीं है. अगर हम डी पार्ट देखें, yes, there has been comparison has been done with the modern predatory animals in the paragraph of that of Tyrannosaurus rex, but it is that is not जो सिर्फ यही चीज दी गई है पैराग्राफ में. ठीक है. मोर हैज बीन टोल्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर डायनासोर. ओके. सो the best option here is C.
Tyrannosaurus Rex Spire's reputation is now laid to rest. ठीक है, उसके बारे में ये बोला गया था, फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है. ठीक है, साइंटिस्ट से ये पता लग पाया और अब ये पता चला है कि वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं था, तो उसकी जो वो रेपुटेशन जो है उसको अब उस चीज के ऊपर स्टॉपेज आ गया है, हैज बीन नाउ लेड टू रेस्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बीइंग नोन एज द फेरारी ऑफ डायनासोर्स मींस, फेरारी ऑफ डायनासोर्स का क्या मतलब है? फर्स्ट इज पार्ट ए, वॉर शूज, कि वो शूज पहनता था. Was a quick and agile creature, was a hunting machine, was the most ferocious of dinosaurs, or none of these. इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको फेरारी, फेरारी आप हम कार के लिए यूज करते हैं, यानी कि स्पीड के लिए यूज करते हैं. तो ए पार्ट तो थोड़ा सा अजीब सा आंसर लग रहा है, वॉर शूज, दैट इज टोटली रॉन्ग. ओके, then we are left with B, C, D and E. Yes, he was quick and agile creature. So इसलिए E part जो हमारा है वो भी क्रॉस हो गया, जिसमें none of this लिखा हुआ है. So now we are left with the three parts B, C and D. Was a quick and agile creature. Was a hunting machine. ठीक है? Was the most ferocious of dinosaurs. For answering this question, let us move again backward to our paragraph. ठीक है? In order to find its answer. Okay. Now we will locate the word Ferrari of dinosaurs. Now research suggests that far from being the Ferrari of dinosaurs, Tyrannosaurus rex, whose ferocious reputation has fascinated generations of school children, was in fact a cumbersome creature and used with the usual running speed of 25 kilometers an hour. Okay, so what could be the answer is that Ferrari of dinosaur here means that he was a quick and agile creature. Okay? वो एक quick creature था. Okay? Ferrari जो है ना, Ferrari, as I've already told you, it is related to the car. Car means speed. Speed से related है. ठीक है? तो speed से related का मतलब यहाँ पे देखो ferocious से नहीं आएगा. ठीक है? Ferocious और एक quick होना, that is different. हंटिंग भी यहाँ से डिफरेंट है. हंटिंग इज ऑल्सो नथिंग टू डू विद दैट, आई मीन द स्पीड. ओके, so here what is most appropriately related with the Ferrari of dinosaur is quick. Okay, quickly again it is related with the speed से related है, so B part is the correct answer. Next is question 17. In turning, a Tyrannosaurus would have been hampered by. जो Tyrannosaurus है, जब वो जो टर्न करता है, ठीक है, उसकी टर्निंग को हैम्पर कौन करता है? तो हैम्पर का मतलब पता होना चाहिए. ठीक है, हैम्पर. हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय हैम्पर? हैम्पर मीन्स रुकावट. ठीक है, उसकी स्पीड में, उसको टर्न करने में जो रुकावट आती है वो किस चीज की वजह से आती है? कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वो किस चीज की वजह से आता है? फर्स्ट, because of its weight. Second, its bulky leg muscles. Third, its overall size, its tail length, and E, all of the above. Okay, so let us see what could be the answer. Here, first of all, we will locate that where the talk of turning, it is in the second half of the paragraphs, the given passage. Okay, so let us see where it is. Yes. Unlike some of the predators of today's African savanna, which can change direction almost immediately, the dinosaur would have had to turn slowly or risk tumbling over. And while a human can spin 45 degrees in a 20th of a second, the Tyrannosaurus would have taken as much as 2 seconds, as it would have been hampered by its long tail. It has been clearly mentioned. ठीक है, इसमें तो कोई second thought हमारी है ही नहीं. Who is hampering the Tyrannosaurus in turning? Okay, it is its long tail. Okay, so let us see what is the answer. So its tail length, long tail,
tail length की बात ही की गई है, वहां पे भी long tail है. So D is the correct answer over here. Okay. So, dear students, I hope that you are getting the point, you are getting the strategies that I have discussed in this particular video related to comprehending a given passage. Okay, go through the various tips, go through the various strategies and techniques, and point of caution also. Okay, वो ध्यान से सुनिए, पढ़िए, so that you will be able to answer the questions given in the comprehension. Okay, so all the best. Thank you so much.